As your corporate insurance partners, we are delighted to bring you this important webinar on healthy heart, cardiac arrest, preventive measures, and technology. Together, we'll explore the latest advancements in cardiac care and preventive strategies to help you lead a healthier life. We are honored to have Dr. Ashish Agarwal, a renowned cardiologist with extensive expertise in interventional cardiology, who will provide valuable insights into preventing heart health diseases and improving the heart health. Let's dive deep into the discussion. Over to you, Dr. Ashish. Thank you, ma'am. Thanks for the kind introduction. A very good evening to everyone. And I wish you all a very happy Diwali in advance. So today we'll be discussing a very important topic, which is called as a maintaining healthy heart. We all know that we all of us, we want to maintain the heart health in a very important manner. So I will discuss some tips and tricks how to keep your heart healthy. So we all know that keeping your heart healthy is one of the most important ways to make sure that you are that one second. Can we remove this? Okay. So keeping your heart healthy is one of the most important ways to make sure you are feeling your very best. As a young person, if you start doing small things every day that keeps your body healthy, you have a better chance of living a longer, happier, and healthier life. So it is very important that some people believe that heart disease are a disease of elderly. It is not so, and it is always recommended that you start your healthy lifestyle at a very younger age. In fact, we say that in the very teenage life of our children, we should teach them some healthy lifestyle so as to keep them healthy in the later in their life. So these are the 7 tips which I will be discussing in brief. So how to keep my heart healthy. Then the 7 simple ways to live better are avoid smoking and using every kind of tobacco products. You have to be physically active, which is very important. Diet is equally important. You have to maintain a healthy weight. You have to maintain your blood pressure, control your cholesterol and sugar also in a proper manner. So first thing is smoking any tobacco products. So if you are smoking, then don't smoke. And smoking is #1 modifiable cause of death. Here again, I would emphasize on the word something called as modifiable. We actually divide cardiovascular risk factors into modifiable and non-modifiable risk. That means modifiable means that we have a complete control on these risk factors and we can modify these risk factors in our favor so as to prevent cardiovascular diseases. There are certain non-modifiable risk factors also. For example, increasing age, male gender, family history. These are non-modifiable causes of cardiovascular disease. Because these are non-modifiable, we have completely no control over these risk factors. So I'm not going to discuss these reasons for cardiovascular diseases. So all you need to know about smoking and cardiovascular disease is that any form of tobacco increases the risk of CVD. That means some people ask that if I don't smoke but I chew tobacco, is it safe for me? I would say no. So any form of tobacco, you take it in the chewable form, you sniff it, you smoke it, any form of tobacco increases the risk of heart attack by twofold. On an average, a smoker die 8 years earlier than non-smokers. And if you combine the risk factors, for example, if you combine smoking and high blood pressure, it not only algebraically increases your risk of heart attack, it exponentially increases the risk of your heart attack. So these are the risks from smoking. If you can see that smoking can damage every part of your body right from head to toe. We are not going to discuss every disease which is caused by smoking. We are going to discuss the cardiovascular diseases associated with smoking. And now we know that worldwide, if you talk about what is the most common reason for death worldwide, and the cardiovascular disease is the single largest cause of death, and it causes every 1 out of 3 deaths. And the risk of death increases with the number of cigarettes smoked per day. That means some people say that I smoke only 1 cigarette per day. Then am I safe? So I would say that every body is different. Some people they smoke so many cigarettes per day, they may not develop a heart attack. Some people are smoking 2 or 3 cigarettes per day, they may develop a heart attack. So every body is different and it reacts differently to smoking. And the best thing we can do is to completely quit smoking, because in science we always say it is all about probability. That means the number of cigarettes you smoke more, then the probability of you having a heart attack increases.
The main adverse effect of nicotine from tobacco is addiction, which sustains tobacco use. And women who smoke and use oral contraceptives, they greatly increase the risk of heart disease and stroke as compared to men. So now we see that unfortunately the incidence of smoking is increasing in women. Previously, we used to say only the men used to smoke, but now it is not limited to the male gender. Now we see that more and more females are also smoking. So there are over 7,000 chemicals in smoking, and the two most harmful are nicotine and carbon monoxide. So what nicotine does, it causes addiction, it increases your heart rate, blood pressure, and it narrows down your arteries. What carbon monoxide does is that it robs the heart of oxygen. It actually, there is a chemical called hemoglobin which carries blood in your blood, which carries oxygen in your blood. Now, this carbon monoxide, it displaces oxygen from hemoglobin and it attaches to the hemoglobin. And then this carboxygenated hemoglobin is circulated throughout the body. Then this is how it damages the heart. So hazardous substances in cigarette, it damages the wall of our blood vessels and endothelial cells. Endothelial cell is the internal lining, which we call it as is important for lubrication of the vessel wall. I'll be showing it with some diagrams in the later few slides. Then the cholesterol and fat, it accumulates in the vessel wall and causes the vessel to swell. And this swelling actually encroaches the lumen of your vessel and thereby it narrows down the vessel lumen, and it is how it hampers the blood circulation. So now there's something called as second-hand smoke. One guy says that I don't smoke, my friend smokes, but I just stand by him and I don't smoke. So now we have data that second-hand smoking is as bad as the first-hand smoking, and it can also cause heart attack and stroke, and it increases the risk of heart diseases by 30%. In fact, ओके, इनफैक्ट नॉन स्मोकर्स यानी कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते उनकी बॉडी स्मोकिंग को और खराब मैनर में रिएक्ट करती है एज कंपेयर टू दोज हु स्मोक. सो वी हैव टू बी केयरफुल के पैसिव स्मोकिंग यानी कि सेकंड हैंड स्मोकिंग भी फर्स्ट हैंड स्मोकिंग की तरह डेंजरस हो सकती है. तो कोशिश करिए कि अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में स्मोकिंग करता है तो उस समय उस सिचुएशन को आप अवॉइड करें. Some people say that celebrities also smoke. ये भी स्मोक करते हैं, उनको कुछ नहीं होता, तो ऐसा नहीं. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. हम वी ऑल नो दैट ही इज वॉल्ट डिज्नी. सभी इनको जानते हैं. वॉज अ ग्रेट एनिमेटर एंड प्रोड्यूसर. और उनकी डेथ जो है वो 65 ईयर्स की एज पर हुई थी एंड ही वॉज डायग्नोज्ड विथ लंग कैंसर. बट उन्होंने कभी सिगरेट्स के साथ फिल्टर यूज नहीं किया. सो कैन वी क्लेम कि आई 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 यूज cigarette with filter, so am I safe? So I'll give you another example. He is also a well-known celebrity. He also died at an age of 63 years and he died of emphysema. So emphysema एक तरीके की एक लंग डिसीजेस होती है जिससे क्रॉनिकली स्मोकिंग करने से लंग्स यानी कि फेफड़े हमारे कमजोर हो जाते हैं और उससे सीओपीडी और एम्फाइसेमा होने का खतरा होता है. तो अभी हम बात करेंगे एक जनरल टर्म में जैसे बोलते हैं नसों में ब्लॉकेज का होना. उस ब्लॉकेज को मेडिकल टर्म में हम कहते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस. सो व्हाट इज एथीरोस्क्लेरोसिस? एथीरोस्क्लेरोसिस मींस हमारी जो वेसल्स होती हैं, आई शो यू दिस एग्जांपल दैट दिस इज अ नॉर्मल वेसल. ये एक हेल्दी नॉर्मल वेसल है. जब ये ब्लॉकेज प्रोड्यूस होती है तो इसको हम कहते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस. सो इनिशियल ईयर्स में ये ब्लॉकेज इज स्मॉल. आप देख सकते हैं कि ये ब्लॉकेज वेसल की वॉल में जमा होती है और ये धीरे धीरे करके वेसल की ल्यूमेन को एनक्रोच करने लगती है. एंड यू सी दैट ये जो डायमीटर है वेसल का या वेसल का जो कैलिबर है वो धीरे धीरे करके कम होता जाता है और इससे हार्ट की ब्लड सप्लाई रुकने लगती है. जब इस ब्लॉकेज पर क्लॉट डिपॉजिट हो जाता है यानी कि अचानक से इस ब्लॉकेज के फटने से इस पर क्लॉट डिपॉजिट होता है, इस ये मैकेनिज्म होता है हार्ट अटैक का. तो ये जो ब्लॉकेजेस होती हैं इन्हें मेडिकल लैंग्वेज में एथीरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है और उसका एक बड़ा रीजन स्मोकिंग होता है. तो अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो ये एक नॉर्मल आर्टरी है जिसमें ब्लड इजीली और स्मूथली फ्लो कर रहा है. ये एक आर्टरी है जिसमें ये ब्लॉकेजेस दोनों तरफ से आ रही हैं और इसमें ब्लड की सप्लाई हैम्पर हो जाती है. तो ये एक सिचुएशन होती है जिसमें पेशेंट को एंजाइना होता है और इस डिसीज को हमारी लैंग्वेज यानी कि मेडिकल लैंग्वेज में कोरोनरी हार्ट डिसीज या कोरोनरी आर्टरी डिसीज कहा जाता है. कोरोनरी वर्ड बेसिकली कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं, जो वेसल्स हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उन्हें हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज. तो अगर आप देखेंगे जितने हार्ट पेशेंट्स होते हैं जिनको स्टेंट लगा होता है, अगर आप उनका प्रेस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उस पर एक एब्रिविएशन लिखा होता है CAD. सो CAD का मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज. तो ये जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज होती है इसमें ब्लॉकेजेस आने के कारण
हार्ट अटैक होता है। अब इसको सिम्टम से कैसे कोरिलेट करते हैं, आई विल टेल यू। कई लोग कहते हैं कि जब व्हेन दे आर टोल्ड दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम अ हार्ट अटैक, सो द फर्स्ट थिंग द पेशेंट सेज कि मैं कल तक तो ठीक था सर, आज एकदम से हार्ट अटैक कैसे होता है। तो मैं इन चार डायग्राम के थ्रू आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ अ हार्ट अटैक, कि ये क्या बीमारी है और ये कैसे होती है और ये कैसे प्रेजेंट करती है। अगर हम इस नॉर्मल आर्टरी को देखें तो यू कैन सी ये एक सर्कुलर ल्यूमेन है जिसमें पूरी तरीके से आपकी ल्यूमेन नॉर्मल है। ये बिगिनिंग ऑफ ब्लॉकेज है, आप देख सकते हैं कि इसमें हल्की सी ब्लॉकेज आती है। और टिल दिस स्टेज और इवन अप टू 50 to 70% ऑफ द ब्लॉकेज, पेशेंट को किसी तरीके के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, वो कंप्लीटली एसिम्टोमेटिक होता है। अब चूंकि हार्ट की प्रॉब्लम इज इनसाइड, so no one can see the heart, so no one can assess how these how much the blockages are. जब ये ब्लॉकेज एक लेवल के ऊपर चली जाती है, यानी कि 70-80% के ऊपर चली जाती है, तो उस सिचुएशन में पेशेंट को चलने से एंजाइना होता है, चलने से चेस्ट पेन होता है, विच इज कॉल्ड एंजाइना। तो दिस एंजाइना वर्ड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एवरीबडी शुड नो। एंजाइना होता है हार्ट वाला पेन। एंजाइटी, some people like confuse it with anxiety versus anxiety. Anxiety we all know, and angina is cardiac pain, यानी कि हार्ट के होने वाले पेन को हम एंजाइना कहते हैं। ये पेन इनिशियल स्टेजेस में सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी करने से होता है, यानी कि अगर आप चलोगे या वॉक करोगे या स्पीड से चलोगे, सम पीपल एक्सपीरियंस दिस पेन व्हेन दे गो टू अ हिल स्टेशन एंड वॉक अप हिल, तब उनको चलने से छाती में भारीपन होना या दर्द होना, उसको हम एंजाइना कहते हैं। और एंजाइना इज नॉट इक्विवेलेंट टू पेन। एंजाइना इज एनी काइंड ऑफ चेस्ट डिस्कम्फर्ट। अब ये चेस्ट डिस्कम्फर्ट भी लोगों को लगता है कि हार्ट लेफ्ट साइड में होता है तो चेस्ट पेन लेफ्ट साइड में हो सकता है। हालांकि उसका हार्ट का पेन यानी कि एंजाइना आपकी अम्बलाइकस से लेकर जॉ तक, लेफ्ट हैंड से लेकर राइट हैंड तक, किसी भी पोजीशन में हो सकता है। स्पेसिफिकली अगर ये पेन, हैवीनेस, बर्निंग, चोकिंग सेंसेशन चलने से या एक्सर्शन करने से बढ़ता है और रुक जाने से यानी कि रेस्ट करने से ठीक हो जाता है, तो ये क्लासिकल एंजाइना होता है। इस सिचुएशन में आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट को इमीडिएटली दिखाना चाहिए। जब ये वाली स्टेज में पेशेंट को एट रेस्ट कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, उसको सिम्टम्स आते हैं काम करने से या एक्सर्शन करने से। जैसा कि मैंने पिछले डायग्राम में दिखाया था, जब ये ब्लॉकेज रप्चर हो जाती है, इसके ऊपर क्लॉट बन जाता है, तब हार्ट अटैक होता है। दैट मीन्स हार्ट अटैक कैन अकर इन 5 मिनट्स, बट उसके अंदर जो ब्लॉकेज होती है ये इट टेक ईयर्स टू डेवलप। मतलब ये ब्लॉकेजेस रातों रात नहीं आती, इनको सालों लगते हैं। सो अगर ये सेम ब्लॉकेजेस हार्ट की आर्टरीज में आती है तो हम उसे कॉरोनरी आर्टरी डिसीज कहते हैं। सेम ब्लॉकेज अगर आपके हाथ या पैरों की आर्टरीज में आती है तो उसे पेरिफेरल आर्टरी डिसीज कहते हैं। और उसमें सिम्टम्स भी उसी चीज से डिसाइड होते हैं कि किस ऑर्गन को लेकर ब्लड सप्लाई हैम्पर हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर आप के पैर की नस में ब्लॉकेज आई है तो सेम चीज, अगर आप एट रेस्ट है तो इनिशियली कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, चलने से पैर में दर्द होता है जिसे हम क्लॉडिकेशन कहते हैं। और एडवांस स्टेजेस में जब ये ब्लॉकेज इतनी ज्यादा हो जाती है कि एट रेस्ट ब्लड सप्लाई हैम्पर होती है, तो पेशेंट को ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है जिसे हम गैंग्रीन कहते हैं। और एडवांस स्टेजेस में आपको पता है कि पैर को काटना भी पड़ता है। सो क्विटिंग स्मोकिंग कट्स कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी डोंट नो कि एग्जैक्टली किस स्मोकर को हार्ट अटैक होगा, किस स्मोकर को हार्ट अटैक नहीं होगा, ये कोई नहीं कह सकता। तो हमारे हाथ में सिर्फ इतना होता है, व्हाट वी कैन डू इज टू क्विट स्मोकिंग एंड रिड्यूस आवर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। एंड द गुड थिंग इज कि 1 साल के अंदर स्मोकिंग छोड़ने से आपके हार्ट अटैक की रिस्क हाफ होती है। और विद इन 3 to 5 years हार्ट अटैक की रिस्क इट इज एज गुड एज अ नॉन स्मोकर। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू किट। काफी पेशेंट कहते हैं सर मैं इतने सालों से स्मोकिंग कर रहा हूँ, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू क्विट स्मोकिंग। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि स्मोकिंग से यूजुअली फिजिकल डिपेंडेंस नहीं होती है, इससे साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है। यानी कि अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आप स्मोकिंग को विद इन 1 डे भी छोड़ सकते हैं। एंड वी हैव सीन सो मेनी टाइम्स कि एक बार हार्ट अटैक होने के बाद काफी सारे पेशेंट या ज्यादातर पेशेंट्स नेक्स्ट डे से स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर देते हैं। So most of the people they don't succeed for the first time, but if you take multiple trials and multiple steps, and if you decide that you have to quit smoking, of course you can quit. तो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है स्मोकिंग करने के लिए, स्मोकिंग बंद करने के लिए, कि आपको सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो वो सपोर्ट आपकी फैमिली, फ्रेंड या फिर किसी काउंसलर से भी आता है, या फिर आप कुछ मेडिसिन भी होती हैं स्मोकिंग को छोड़ने के लिए, वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप उन मेडिसिन को ले सकते हैं। एक बड़ा पीयर प्रेशर होता है स्मोकिंग के लिए, कि आपको पता है कि आपके फ्रेंड्स भी स्मोकिंग करते हैं, बट इफ दे आर ओके,
वो आपको दे आस्क यू लेट्स गो एंड स्मोक. So you have to be very careful about it, and you have to be direct to your friends that I don't want to smoke. I have completely quit smoking. You can change the subject. You can have a good joke, and you can have a comeback line. The all most important situation is most important thing is that you have to tell that I am trying to quit, so I don't smoke. That means your willpower is very important. तो ये कुछ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं विच आर अवेलेबल, यानी कि निकोटिन के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि निकोटिन से एक एडिक्शन होता है, तो आप निकोटिन को किसी भी फॉर्मेट में ले सकते हैं, या फिर एक ब्यूप्रोपायन करके एक ड्रग है, वो भी दी जा सकती है. बट किसी भी ड्रग को लेने से पहले यू हैव टू डिस्कस विद योर कार्डियोलॉजिस्ट. सो आफ्टर स्मोकिंग, डिस्कसिंग स्मोकिंग इन डिटेल, मैं बाकी के रिस्क फैक्टर्स भी ब्रीफ में आपको बताना चाहूंगा. The second thing to keep your heart healthy is be physically active. That means फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जो लोग जितना, मैं हमेशा अपने हर पेशेंट को कहता हूँ कि अगर आपको अपने हार्ट को हेल्दी रखना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा वॉक करना है. आप जितना वॉक करेंगे उतना आपके हार्ट की लाइफ इंक्रीज होती है. अब कितना करना है, इसका अपर लिमिट तो कुछ नहीं होती है, डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी एंड योर स्टेमिना एंड योर विल पावर. बट मिनिमम रिकमेंडेशन इज कि आपको 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक डेली आपको करना चाहिए. और अगर आप इसका एक डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हैं तो बेस्ट वे इज टू पार्टनर विद समवन. यू कैन फाइंड अ पर्सन लाइक यू हु आल्सो वांट्स टू गो फॉर अ वॉक. तीसरी चीज होती है ब्लड प्रेशर. ये बड़ी इग्नोर्ड और अनकंट्रोल्ड बीमारी है. इसका यूजुअली कोई सिम्टम नहीं होता, इसके कोई रीजन नहीं होते. 95% पेशेंट्स में इसेंशियल हाइपरटेंशन यानी कि प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है, जिसका कि कोई रीजन नहीं होता. तो ब्लड प्रेशर, अगर हम डेटा देखें तो 50% पेशेंट दे डोंट नो दे हैव हाइपरटेंशन. 50% who know they don't control your hypertension, they don't take medicines. 50% who take medicine, they have still uncontrolled blood pressure. And we know that blood pressure की कोई immediate symptoms या कोई इफेक्ट नहीं होते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लॉन्ग टर्म में ये आपकी सारी बॉडी के ऑर्गन्स को धीरे धीरे करके डैमेज कर सकती है. सो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स होते हैं, यानी कि आपको एक हेल्दी वेट मेंटेन करना है, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, अल्कोहल को मॉडरेशन में रखना है, सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन करना है. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ज्यादातर लोगों ने सफेद नमक को रिप्लेस कर दिया है सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट से, विच इज नॉट अ ट्रू कॉन्सेप्ट, विच शुड नॉट बी डन. बिकॉज आपका जो सेंधा नमक है वो आयोडाइज नहीं होता, तो आपको सफेद नमक ही यूज करना है. बट आपको एडिड सॉल्ट यानी कि सैलेड, अचार, पापड़, चिप्स और वट एवर काइंड ऑफ कैंड एंड पैक फूड शुड बी अवॉइडेड इन योर डाइट टू कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर. Now we know that blood pressure is very simple measure. Now almost every house has a blood pressure apparatus. तो आप अपना बीपी अपने घर में भी चेक कर सकते हैं. जो ऊपर वाली रीडिंग है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और नीचे वाली रीडिंग को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं. एंड आइडियली योर ब्लड प्रेशर should be less than 140 by 90 millimeters of mercury. So if you are having a blood pressure more than 140 by 90, make sure that you meet your cardiologist. Now the next thing is eat a heart healthy diet. Now, the diet जो आप लेते हैं should be rich in fruits and vegetables. You should take whole grain food. आप fish ले सकते हैं, especially oily fish, क्योंकि उसमें omega 3 fatty acids होता है. Trans fat or saturated fat, which is now becoming more and more rampant due to introduction of this junk food and fast food, is very rampant. तो वो trans fat और saturated fat आपको minimum रखना है. लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, एंड आपको अपने बेवरेजेस एंड फूड्स विद एडेड शुगर भी कंट्रोल में रखना है. बिकॉज अगर आपके ब्लड में चर्बी ज्यादा है तो वो सिर्फ मीठा चिकना खाने से नहीं होता है. आपके इफ यू टेक अ लॉट ऑफ शुगर्स, इट इज ऑल्सो कन्वर्टेड इन योर बॉडी इनटू फैट एंड डिपॉजिटेड. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू कीप योर वेट हेल्दी. Now, we know how to measure the weight. So, how to know what is your ideal weight? एक बड़ा simple सा parameter होता है, which is called as body mass index, which is height in meters, height in centimeter divided by weight in kg. Weight in kg. There's a simple formula for that. So, your BMI should be less than 25. अगर आपका BMI 25 to 30 के बीच में है तो ओवरवेट है, और 30 to 40 के बीच में ओबीज है, और 40 के ऊपर है तो आप मॉर्बिडली ओबीज है. तो बड़े सिंपल तरीके से हाइट इन मीटर, वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, यू कैन टेक कैलकुलेट योर बॉडी मास इंडेक्स. नाउ द सेकेंड लास्ट थिंग इज द कोलेस्ट्रॉल. जैसा कि मैंने आपको बताया ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम्स नहीं होते, उसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल के भी कोई सिम्टम्स नहीं होते. अगर ये आपकी
ब्लड में एक लिमिट के ऊपर है, तो ये आपके वेसल्स में धीरे धीरे करके डिपॉजिट होने से भी आपके वेसल्स में नैरोइंग होती है और उससे ये हार्ट अटैक प्रोड्यूस कर सकता है. So, as I told you that you should choose food which are low in saturated fat and trans fat, especially the young generation, the newer generation is taking a lot of saturated fat, and they should be educated about this saturated fat in their teenage life so as to prepare for the future. Now, the last thing is, which is we know that India is the capital of diabetes in world, and by our genetic makeup, at least 40 to 50%, 40-45% people, all of us are 40-45% of us are pre-diabetic. And what is diabetes? We know that it is a condition जिसमें कि आपके ब्लड में शुगर बढ़ने लगती है, और शुगर के बढ़ने से अगेन इट कॉजेस डैमेज टू एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी. तो डायबिटीज का जो मैकेनिज्म होता है ये बेसिकली इंसुलिन रिलेटेड होता है. या तो आपकी बॉडी में इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होती है, यानी कि बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं है, उसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज. ये यूजुअली अर्ली एज में हो जाती है. या फिर टाइप 2 डायबिटीज होता है जो कि ज्यादातर लोगों में होता है, जिसमें इंसुलिन बनता तो है लेकिन वो पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं होता, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं. और उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस में जो बड़ा रोल होता है वो ओवरवेट यानी कि वेट ज्यादा होना और फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, ये सबसे बड़े फैक्टर्स होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए. तो इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को हम कहते हैं कि आपको वेट कंट्रोल में रखना है और वॉक ज्यादा से ज्यादा करनी है, ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो, शुगर बेटर कंट्रोल हो और कम दवाइयों पर कंट्रोल हो. सो दीज आर डायबिटीज वार्निंग साइंस दैट इफ यू आर, आपको प्यास बहुत लगती है, आप बहुत इजीली टायर हो जाते हो, भूख बहुत लगती है, आंखों के आगे ब्लरिंग होती है, यू गो टू बाथरूम क्विकली, और इफ यू आर लूजिंग वेट क्विकली, these are the symptoms of diabetes. But important thing is that these are the symptoms of advanced diabetes. That means in the initial part of diabetes there are no symptoms. The only way which you can know about whether you are diabetic or not is to check your blood sugar. So by default, if you are not a diabetes, you should get your sugars done at least a year. अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आप थोड़ा सा जल्दी भी करा सकते हैं HbA1c को, या फिर अगर आप प्री डायबिटिक है तो भी आपको थोड़ा सा शुगर को अपनी फॉलो करना होता है. So after discussing all these points, I would say that you have to decide that yes, I can adopt all these healthy lifestyles so as to keep my heart healthy. Thanks for your patient listening. Thank you so much, Dr. Ashish. There are a few questions in the chat. I'm taking them one by one. The first one somebody has put is, does varicose veins cause heart attack? नो, वेरिकोज वेन्स जो होती है आपके पैरों की काफ मसल्स या उसके अराउंड की जो वेन्स होती हैं, उसमें सूजन आने से वो फूल जाती हैं. अगर आप देखेंगे अपने पैर पे तो दे लुक लाइक ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश लाइंस ऑन योर वेन्स, बट दैट इज अ वीनस डिसीज. दैट मीन्स वो आपकी वेन्स हैं जो आपकी बॉडी के पैरों से आपके हार्ट तक ब्लड पहुंचाती है. जो कॉरोनरी आर्टरी डिसीज होती है, हार्ट अटैक इज एन आर्टीरियल डिसीज. सो varicose veins is altogether a different disease. It is not related to heart attack. There may be some common risk factors. For example, वेरिकोज वेन उन लोगों को ज्यादा देखी जाती है जिनका वेट ज्यादा होता है या जिनका प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग वाला काम है, स्पेशली काफी डॉक्टर्स में या फिर पुलिस मैन या फिर मिलिट्री पर्सनल. दोज पीपल आर मोर प्रोन टू डेवलप वेरिकोज वेन्स. Okay, thank you. There's another question which says that, is there any side effect to stop smoking immediately? देर इज नो साइड इफेक्ट. इनफैक्ट मैंने आज जैसा कि आपको बताया कि देर आर टू काइंड ऑफ डिपेंडेंस, जिसको हम कहते हैं जो लत लगती है किसी चीज की, एडिक्शन होता है. वो दो तरीके का होता है, एक होता है फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस और एक होती है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस. तो जैसे अल्कोहल की जो डिपेंडेंस होती है वो फिजियोलॉजिकल प्लस साइकोलॉजिकल दोनों होती है. यानी कि अगर आप किसी ड्रग को या अल्कोहल या किसी भी एडिक्शन को आप बंद करते हैं तो आपको उसके विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं. विड्रॉल सिम्टम्स में आपको बहुत सारे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस चीज को छोड़ा है, वो आते हैं. उसको फिजिकल फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस कहते हैं, क्योंकि आपको उस चीज, उस केमिकल की आदत लग गई. साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है कंप्लीटली दैट आपको एक साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है कि आपको इस सब्सटेंस को अब्यूज करना है. स्मोकिंग के केस में फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस इज वेरी लेस. सो सम पीपल दे कैन आउटराइटली स्टॉप स्मोकिंग एंड देर आर नो साइड इफेक्ट्स ऑफ सडनली क्विटिंग स्मोकिंग. यू कैन एक्चुअली डू इट. Got it. Thank you so much. And there's another question, and everybody, you can put your questions in the chat. I'm taking them one by one. Please go ahead and just put them there. On Okay? QA section. Yeah, on the Q&A. Right. So there's another question which says that nowadays, many youngsters are having heart issues while being fit. Can you throw some light on that?
Yes, now there is a lot of hue and cry in the society that every day we are seeing more and more younger people who are suffering from heart attack. So I cannot answer this question in one line. नंबर वन नाउ, ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक्स यंग में पहले नहीं होते थे, पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं, अब ज्यादा रिपोर्ट होते हैं बिकॉज नाउ देयर लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज डाइड इन देयर यंग एज. सो social media and the your electronic media is publishing it more, so now more and more younger people are coming in limelight while they are dying of heart attack. बट यस, अगर हम देखें तो एक एवरेज एज हार्ट अटैक की एज कंपेयर टू प्रीवियस, वी टॉक अबाउट 1 or 1.5 डिकेड बैक, एक एवरेज एज हार्ट अटैक की कम हुई है और हो रही है. इसके पीछे कुछ कारण हैं. सबसे पहला कारण है राइजिंग इंसिडेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स. यानी कि जो मेजर कारण है हार्ट अटैक के पीछे, विच वी डिस्कस, देयर आर 4 मेजर रीजंस फॉर हार्ट अटैक: शुगर, बीपी, स्मोकिंग एंड कोलेस्ट्रॉल. तो ये जो रीजंस है हार्ट अटैक के, ये इन रीजंस की एज कम हो रही है. दैट मीन्स मोर एंड मोर यंगर पीपल आर गेटिंग हाइपरटेंशन, डायबिटीज, more and more people are smoking, so there is an increase in the surge of, there is a surge of risk factors. That is why younger people are getting heart attack. Secondly, एक बड़ा unfortunate situation है कि if we write medicine, suppose a patient comes to me with cholesterol or high blood pressure, and if I write medicine, the first thing they ask is that sir, इस दवाई का तो साइड इफेक्ट हो जाएगा और इस दवाई को तो मुझे आदत लग जाएगी, अब जिंदगी भर खानी पड़ेगी. Some people are convinced, some people you can counsel, but even after that, a lot of people, because there is a lot of misconception and poor communication, poor spread of misinformation in the society by social media, that these medicines have side effect, and also people are reluctant. There is an inertia of starting medicines, and these people are not controlling their risk factors, and later they land up in trouble with a heart attack. So that is also another reason for having heart attack in young patients. And now the third and an emerging risk factor for heart attack is the stress. We know that in stress there is the stress causes more and more binge eating. Stresses for those who people take more stress, they smoke more. So stress also directly or indirectly affects your heart, the risk of heart attack. So as we are getting more and more urbanized, and we are getting more, we see more corporate culture. So that is why the stress is increasing and the risk of heart attack is increasing in young patients. Got it. Thank you. Some people think that hookah has less impact as versus the smoking. Is that I right? don't agree with that, because we say that any form of tobacco is dangerous to your heart. Got it. Next one. How dangerous is it for a patient with high blood pressure and diabetes to consume alcohol and smoke? And what is the associated risk to their heart health? See, whenever we talk about, as I told you, that once you keep on adding the risk factors, for example, if you have, if hypertension doubles the risk of heart attack, if diabetes doubles the risk of heart attack, but if you combine hypertension and diabetes, it will not be 4 times the risk of heart attack, it will be 8 times the risk of heart attack. So if you combine and add more and more risk factors, then the risk of heart attack, of course, goes up. Alcohol, we say that it is not directly linked to heart attack. And if we look about the literature, they say that if you take alcohol in moderation, it is okay to take it. But I think that that concept holds true for the Western population. Indian population, Indian livers are probably not meant to take that amount of alcohol. Got it. Another question. Is 1 hour of exercise and 30 minutes of meditation sufficient to maintain heart health for someone with no history of smoking or alcohol consumption and having no history of diabetes? Yes, so that is the minimum recommendation we can do. That minimum 30 minutes of brisk walk or aerobic exercise you should day per day. Now, as I told you, that which smoker is going to develop heart attack, which smoker is not, we don't know. So everything which is in our hand is to keep our heart healthy, and you should do this amount of minimum exercise per day. Over and above, of course, if you have time and if you have stamina, you should do and you can do. And if that person does not have diabetes, in that case, would that much of exercise and meditation be sufficient? No, no, it is irrespective of your other risk factors. For example, if you have diabetes or if you don't have diabetes, this physical activity is important. Got it. The next question from Sahil is, does breathing exercises help our heart health if done daily? See, breathing exercises are actually, if you talk about science, people think that once I'm doing yoga, this is also very unfortunate. People are coming with uncontrolled diabetes and hypertension, and they say that we are doing yoga, sir. हमने sugar
उगर की दवाई सब बंद कर रखी है, बीपी की दवाई बंद कर दी क्योंकि हम योगा कर रहे हैं. दैट इज नॉट ट्रू. I always tell it to all my patients that yoga is very, very important. It is important to understand that yoga has its own effect on your heart. It is very important for the overall general well-being of your body. That means it has, if you do breathing exercises, meditation, all these exercises are very important, and there is evidence that it improves your heart health. Why? Because it reduces the amount of stress in your body. But we should not have unrealistic expectations from breathing exercises that my sugar will be controlled, my blood pressure will be controlled. By any means, your numbers of sugar and blood pressure should be controlled. Yes, breathing exercises, they reduce the amount of stress and adrenaline drive, sympathetic drive in your body, and it protects your heart. Got it. The next one is that I have gas problems and occasionally sometimes I get mild pain right side of heart. How is it curable? Uh, this caution, once you say that you have gas problem, my first suggestion is that this can be a symptom. Let your doctor decide whether it is a gas or what. See, I'll tell you one thing. When we see 10 patients in a day, for example, if I see 10 patients with chest pain, 9 out of 10, average 9.5 out of 10 patients will not have a heart attack. They will be having gas. But even if you miss 1 out of 10 heart attacks, 1 out of 10 patients, and if you label all patients as gas, we have seen a lot of lives being lost because they presume that they have gas. So if you feel like having some such symptoms, meet your cardiologist, get yourself examined by him, because most of the time the patient's symptoms, the history gives us an idea. 70-80% of the idea we get by history and examination, that the patient is actually not suffering from cardiac disease, it is suffering from gas. So don't label yourself as gas, let your doctor decide it. Got it. The next one is somebody wants calculation for BMI. I believe they were told by you earlier, but still over to you. Sorry, I did not get the question. Please mention the BMI, how to calculate that. Body mass Okay, index. that is kg per meter square. I was bit fumbling at that time. So it is a very simple that you take your weight in kg divided by height in meter square. Now you have an online calculator also. It's a very simple. For example, your weight is 60 kg. You take your height in meter. So it is 25 is the upper limit, kg per meter square. Got it. The next question is COVID vaccine reason for the heart attack? I would probably be reserved for this because I don't think we have a solid evidence to say that COVID vaccination is causing heart attack. See, you cannot have that evidence also. Many people say that after COVID pandemic, now these young heart attacks are increasing. See, this can be a temporal association. कि हमने देखा कि कोविड के बाद से हार्ट अटैक के इंसिडेंस बढ़ गए. In our medical language, we call it as a temporal association. But to establish a cause and effect relationship कि कोविड के बाद हार्ट अटैक बढ़ गए, ये चीज ठीक है. लेकिन कोविड के कारण या कोविड वैक्सीन के कारण हार्ट अटैक बढ़ गए, ये कहना बहुत मुश्किल है. रीजन बीइंग कि जब कोविड आया था उस समय सिर्फ कोविड नहीं था, देयर वर अदर रिस्क फैक्टर्स व्हिच आल्सो इंक्रीज्ड. इफ आई टेल यू द ट्रुथ दैट ड्यूरिंग कोविड वी नो दैट everybody was house arrested, nobody was walking. So during COVID, the number of risk factors for heart attack were also increased. That means number one, people's physical activities are almost zero. That adds to the risk of heart attack. People were not going to doctors. That means they were not controlling the risk factors. They were not following up with their diseases. Many people were not even going for dialysis because they believed that if you go to hospital, you will die of COVID. So many people died of COVID, or died of renal failure at home rather than getting a dialysis done at hospital. Then, because there was such a fear of COVID during COVID times, that in emergency we used to receive patient in a broad dead state because they had a chest pain at home, and because of the fear of hospital, they did not go to the hospital. And when the patient had a severe problem, then they'll end up in the hospital. Many patients came broad dead in the hospital. So what I'm trying to tell is during COVID, not only the COVID and COVID vaccination has come, people's weight they increased, people have uncontrolled, their diabetic status was bad in during COVID time. So all the risk factors, they also increase in the COVID time. So to say that it is related to COVID or COVID vaccination, I think before we have a solid data, it's too premature to say. Got that. The next question is that can someone have high BP, which is 160 by 100,
weight under control, no diabetes, but still live healthy life. What precautions one must take? So yes, if a person is living healthy diet or a healthy life, they have a less probability of having hypertension, but that does not mean they will not be having it. So some people, they don't have diabetes, they don't have they are very physically active, but still they can have hypertension. So the probability is less, but they still can have hypertension. And if you have hypertension, and most of the people may need hypertension medication for the rest of life. Most of the people ask कि सर एक बार दवाई शुरू हो गई तो क्या ये जिंदगी भर लेनी पड़ेगी? तो कॉन्सेप्ट ये है लोगों को कि इसकी आदत लग जाती है, विच इज रॉन्ग। यस, ब्लड प्रेशर की दवाई से बीपी क्योर नहीं होता, कंट्रोल होता है, इसलिए आपको बीपी की दवाई आमतौर पर जिंदगी भर लेनी होती है। Got it. Which blood test should be done to understand our heart health better? देर इज नो ब्लड टेस्ट विच विल टेल योर हार्ट हेल्थ बेटर। कुछ लोग समझते हैं कि ट्रोपोनिन करा लेने से, अनफॉर्चुनेटली वंस आई सॉ an advertisement in newspaper that you get your troponin done and see the risk of heart attack, which is absolutely wrong. There is no blood test which tells your heart health. Yes, you should get your blood test done. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको आपका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए, बिकॉज ये वो केमिकल्स है जिनसे आगे चल के हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपको हार्ट की हेल्थ करने के लिए, पता करने के लिए, देर आर अ फ्यू टेस्ट विच योर कार्डियोलॉजिस्ट में एडवाइज यू, जैसे कि ईसीजी है, इससे आपके हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पता चलती है। एको से आपके हार्ट का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पता चलता है। एंड ट्रेडमिल इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट टू डिटेक्ट कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो ये कुछ हार्ट के कार्डियक टेस्ट होते हैं जिससे आपकी हार्ट की हेल्थ पता लग सकती है। Got it. Does mental stress cause heart attack? Yes, any kind of stress, as I told you, that nowadays it is emerging as a very important risk factor for heart attack, because now we all of us, we work in a corporate sector where we have a pressure of performance, we have a pressure of expectation of your customer of zero error. So that pressure, work pressure, is also important. Got it. Can high cholesterol levels depict the risk of heart attack? Yes, cholesterol, as I told you, is one of the four major risk factor for heart attack. Okay. This is again a repetition kind of. Is there any body health check that can be done for heart disease or blockage? I Yes, believe this one we have. as I told you, there's a test called stress test or echo and a treadmill, जो कि आपको, जिससे आपके हार्ट की हेल्थ का आइडिया लग सकता है। बट एनी काइंड ऑफ ट्रेडमिल शुड never be done like that. It should always be advised by your cardiologist. Echo, if you get it done even without an advice, there's no harm in getting the tested. Got it. The next question is diabetes reversal possible? Practically speaking, when you have a borderline diabetes, at times because of good lifestyle, by reducing weight, cut down the amount of sugar in your diet, by getting engaged into strenuous physical activities, borderline diabetes at times can be reversed. But everybody must and should understand that diabetes is a progressive disease. दैट मीन्स आज आपको बॉर्डरलाइन डायबिटीज है या फिर अर्ली डायबिटीज है, तो हो सकता है आज रिवर्स हो जाए, कल फिर आ जाए, या फिर जिनको है उनको भी ये प्रोग्रेसिव डिसीज है, बिकॉज एज यू आर एजिंग योर पैंक्रियाज पैंक्रेटिक फंक्शंस दे स्टार्ट्स गोइंग लो। सो यू हैव टू एक्सेप्ट एंड टेक द मेडिसिन कि डायबिटीज प्रोग्रेसिव डिसीज है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसकी नेचुरल हिस्ट्री ऐसी होती है कि किसी को 10-20 साल बाद फाइनली चल के शायद इंसुलिन लगाना ही पड़ता है। Got it. So these two questions are associated, and we have also answered them, some time back. I'm just bringing it up again. Is heart attack in young generations that we are listening to in news due to corona vaccine? Number two, has the corona vaccine increased the risk of heart attacks? I would say that I don't have any such evidence. All right. Next, are there any tests that one can take to see if they are at the risk of blockage? Which blood test should be done to understand our heart health better? So no, as I told you, no blood test is available to predict heart attack. Yes, to have a basic idea, or for a screening purpose, a stress echo can be done. Okay. How frequently we should get the ECG test done to monitor heart health? No, it's not. ECG never predicts heart attack. ECG will come abnormal if a patient is already an established heart attack. So there is no fixed frequency of getting an ECG done. Any patient may require an ECG half an hour later, or may not require an ECG for the next 1 year. So it is the doctor's call to decide when a patient needs an ECG. But Got it. normal ECG does not rule out a heart attack. That is very, very important to understand. Okay.
If a person is physically fit and deals with normal to moderate amount of stress due to the corporate culture, but has a history of heart disease in the family, then in this case, also the person will get the heart disease. See, I will say that to say that the person is going to get the heart disease is not correct. The probability is high. So family history is, as I told you, it is a non-modifiable risk factor. For example, family history does not mean कि अगर किसी के दादाजी को 80 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो गया तो वो उसके बेटे के लिए हार्ट अटैक होगा. सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री जब बोलते हैं, जब मेल्स को लेस देन 55 ईयर्स की एज पर हार्ट अटैक हो, या फिर फीमेल्स को लेस देन 65 ईयर्स की एज के नीचे हार्ट अटैक होता है, तो फिर उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को हम कहते हैं कि उसको सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री माना जाता है. So if you have a significant family history, it is not like that you are bound to get a heart attack. The risk is slightly high in your case. So in that case, you have to aggressively control other risk factors because you cannot control this risk factor. Got it. Very important. That was really insightful. The next one is which blood test should be done to understand our heart health better? I think we have already taken that question. The next one, is it a vascular blocking case? Vascular blocking cases increased after COVID. I heard during COVID times these cases increased basically for vegetarian people. We usually say that vegetarian diet is always better for heart. We always allow the patients to take fish, especially oily fishes, because they are rich in omega-3 fatty acids. But there is no evidence as such, especially vegetarian people had a heart attack in COVID time. Got it. The next question is, can ECG give proper heart health? ECG can tell the electrical activity of your heart. So it cannot tell everything. There are certain things which an ECG can tell. What about angiogram test and TFT? Angiography is meant to see the blockages in your arteries, but every patient need not to undergo this test because it is an invasive test, or even a CT angiography people are getting done. But again, CT angio also requires contrast, so unnecessary angiography should not be done. If a patient has a classical symptoms of angina, or if the stress test is positive, then only we do an angiogram. Got it. Does minor thalassemia person has more chances of getting heart disease as this person's HB is generally low? No, no, no. Okay. Usually, patients who have sickle cell anemia, they have a tendency of clogging in the artery, so they can develop some infarcts, but not thalassemia. All right. To maintain a good heart health, how much minutes of walking should we include in a daily routine? Also, Minimum what 30 kind? minutes. 30 to 40 minutes. 30 minutes minimum. 30 minutes. Also, what kind of exercises help in better heart function? So all kind of aerobic exercises, for be it cycling, swimming, walking, jogging, all these kinds of exercises, they help. Okay. More important is that now people are coming with smart watches. Sir, see, I walk 10,000 steps per day. I walk these many steps per day. That is not important. Important is that at what pace you are walking is more important rather than at how much distance you have walked. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम पेशेंट्स को इसको इस तरीके से ही समझाते हैं कि अगर आपको चलने से सांस नहीं फूल रहा, आप थक नहीं रहे, पसीना नहीं आ रहा, देन इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट वॉक इज नॉट beneficial to your heart. Got it. If I have diabetes today and later I controlled by habits, then should it be advisable to continue medicine for blood sugar? No, it is not decided by if it is controlled. As I told you that the control of blood pressure, sugar, cholesterol is not decided by symptoms. It is decided by the targets which are fixed by the medical agencies, that how much sugar is there with your diet, with your dietary habits. For example, your fasting sugar has to be less than 130. Now, if it is just with your lifestyle, that is acceptable. If it's still not, then you have to add medicines, or even you may need to increase medicines. Got it. If is gym goers should have probability of heart attack. So I believe that, and that means does gym goer also has the probability of heart attack? Okay, this is a very, very important question. When there is a recent search in gym goers having a heart attack, so many cardiologists made videos and released in the net. And in one line, I want to tell it to all gym goers that bodybuilding is not equal to cardiovascular fitness. This should be clearly learned. People are believing that बॉडी बिल्डिंग करके आप फिट हो गए हो, ऐसा नहीं है, वो कार्डियक फिटनेस नहीं कही जाती. नंबर टू, एक्सेसिव जिमिंग जो लोग करते हैं उसमें डिहाइड्रेशन होने से हार्ट अटैक हो सकता है.
Most of the people, or I would say that almost all of the people who are going to gym are taking artificial supplements, proteins, which are really, really not recommended. So getting a bodybuilding is not equal to cardiovascular fitness. I tell it to each and every patient of mine, whether you go to gym or you don't go to gym, if you go for some aerobic exercise, that is more than enough. And if you actually calculate the body mass index of all gym goers, they all fit into the category of overweight. None of them is they have their body mass index less than 25 because they are eating uh, a lot of proteins. I don't know, this whey proteins and all, they are all taking supplements. So please remember, cardiovascular fitness cannot be considered as bodybuilding. Got it. So, next question from my end, since it's come to the supplements, is it unhealthy to consume those supplements that people have at gym? Yes, absolutely not recommended. It is clearly written in our textbook that any kind of supplements, they have not shown any kind of benefit. What damage it is causing to your body, I can't say, but there are no supplements which should be taken. Unnecessary supplements should not be taken. Got it. Does lipoma has any impact on heart health? No, no, not there's no direct cause and effect relationship. But yes, of course, if your blood has a increased amount of lipids, that causes heart attack. Got it. Lipoma is actually a deposition of fat in your skin. It is not directly related to your having a fat in your blood. Rather than that, there are some deposition around your eyes which is called xanthelasma. They have a direct connection with your heart attack. Got it. Is there any chance to clear their blockages naturally? No. Once people, they have to understand that there is no medicine in this world which can reverse your blockage. Whenever we give these medicines, the purpose of these medicines is to halt the blockage. यानी कि जो blockage है वो वहीं रुकी रहे, वो आगे कॉम्प्लिकेट ना हो, वो प्रोग्रेस ना करे। जो दवाइयां हैं स्टैटिन्स, उससे 5-10% रिवर्सल देखा जा सकता है। बट टू से कि एक 90% ब्लॉकेज इस दवाई से क्लियर हो जाएगी, इट इज कंप्लीटली अ मिथ। Got it. The next question. My father has a heart blockage and is diabetic. Which medicine can be given in the heart attack as a first aid? सी अगर किसी को डॉक्यूमेंटेड यानी कि प्रूवन हार्ट अटैक है, द फर्स्ट थिंग वी डू इज वी गिव अ लोडिंग डोज। लोडिंग यानी कि एक ब्लड थिनर की एक लोडिंग डोज दी जाती है, जो कि डिस्प्रिन, आप घर घर में, आपके पास घर में डिस्प्रिन है तो आप उसकी टैबलेट को चबा सकते हैं। देन देर आर अदर मेडिसिन विच आर P2Y12 इन्हिबिटर, मतलब देर आर टू अदर ब्लड थिनर्स जो कि हम देते हैं। अगर आपके पेशेंट को ऑलरेडी ब्लॉकेज है तो दे ही मस्ट बी ऑलरेडी टेकिंग इट, सो देयर इज नो पॉइंट गिविंग इट अगेन। सो in case you are suspecting a heart attack, the best thing a person can do is not to diagnose heart attack at home and reach your cardiologist immediately. Got it. Is it possible to have a reversible ischemia with a 95% MHR? Yes, yes, ma'am. Most of no, no, that is THR. I think you are trying to say THR. That is a treadmill finding. Okay. So that is a reversible ischemia means in the stress test we do, we try to induce stress to the heart, and that this line is actually probably taken from a stress test that positive for reversible myocardial ischemia at 95% THR means target heart rate achieved. Okay. Hold on. My father has heart blockage and is diabetic. Should we give wheat flour in every meal? Sure. Should we give? Wheat flour in every meal. Chapati So basically in every meal. yes, you can give. That's not a problem. Whole wheat grain you can use, no problem. All right. Does smoking also affect the eyesight? I would say yes. Okay. Sahil is thanking you for taking up the questions and explaining. The next question is artificial protein supplement should be avoided? How can we get enough protein, especially from a vegetarian diet? Also, should we take additional proteins after 35 plus? No, I'm absolutely against taking any kind of artificial proteins and all. There are vegetable proteins which are available. We know that you can take paneer, dal, soya bean. You can take egg white if you are a vegetarian. But of course, no artificial protein supplements are required. And I fairly give an example to all of my patients because the new generation has been taught by this media and electronic media that if they don't take supplements, they cannot live. So I give them an example that you have your grandfather, you tell me at what age he died.
So if people say that they died at, my grandfather died at 90, my grandfather died at 80, so I tell them that they never had supplements in their life. तो अगर आपको किसी ने ये पढ़ा दिया है कि अगर जब तक आप प्रोटीन के सप्लीमेंट नहीं खाओगे आप 35 ईयर जिंदा नहीं रह सकते, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग. नेचुरल फूड शुड बी टेकन. पीपल हु हैव completed their lifespan of 80, 90 years, your elderly, your grandparents, they never even ever heard about of these supplements in their life. Got it. And does the body requirement change after 35 years that the protein should go more? I don't think so. It is all decided by how much you are physically active. All right. The next question is uh, oil or ghee, which one is better for heart health? So we always say that you always take unsaturated fats. That means मोटा मोटा you can understand कि जो oil आपके room temperature पर liquid state में है, which is an unsaturated fat, and जो solidify हो जाता है जैसे कि coconut oil, butter, ghee. In fact, your all these trans fats जो आपके burger, pizza, mayonnaise, and all this is all trans fat. It should be avoided. So you can use mustard oil, sunflower oil, or olive oil for cooking. But there is no need of a zero oil food. Some amount of fat is required in your diet. So whatever fat is being used in cooking food, that's completely acceptable. Got it. Everybody, are there any last minute questions? We have taken the one that were there in the Q&A. Anything else anybody wants to know? Analyst thanking you for the valuable inputs. All right, I think there are no more further questions. A heartfelt thanks to you, Dr. Ashish, for your informative and inspiring presentation. Thank you, everybody, for your time, participation in today's webinar. We hope the session gave you valuable knowledge and actionable steps to safeguard your heart health. And remember, taking small steps can lead to a healthier heart in the long run. Take care, everyone. Enjoy your evening ahead. So thank you very much. I wish you a very happy Diwali in advance once again, and wish you a very healthy heart. Thank you so much, Dr. Okay. Sir. Thank you so much, Dr.